गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। हमारे सभ्य सामाजिक जीवन का आधार गुरु है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विश्व के समस्त गुरुजनों को मेरा शत शत प्रणाम। गुरु के महत्व को हमारे सभी संतों, ऋषियों एवं महान विभूतियों ने ऊंचा स्थान दिया है। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार एवं रु का अर्थ है प्रकाश। गुरु हमें अज्ञानी रूपी अंधकार से ज्ञानी रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। सांसारिक रूप दुनिया में हमें प्रथम बार बोलना, चलना तथा शुरुआती आवश्यकताओं को सिखाते हैं। अतः माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। भावी जीवन का निर्माण गुरु द्वारा ही होता है। महर्षि वाल्मीकि, जिनका पूर्व नाम रत्नाकर था, वे अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु दुष्कर्म करते थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की थी, परंतु ये तभी संभव हो सका जब गुरु रूपी नारद जी ने उनका हृदय परिवर्तन किया। गुरु शिष्य का संबंध सेतु के समान होता है। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही परमात्मा को पाने की चाह थी। उनकी ये इच्छा तभी पूरी हो सकी जब उन्हें गुरु परमहंस का आशीर्वाद मिला। छत्रपति शिवाजी पर अपने गुरु समर्थ रामदास जी का प्रभाव हमेशा रहा। गुरु द्वारा कहा एक शब्द या उनकी छवि मानव की काया को ही पलट सकती है। मित्रों, कबीरदास जी का अपने गुरु के प्रति जो समर्पण था, उन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु के महत्व को सबसे ज्यादा कबीरदास जी के दोहों में देखा जा सकता है। एक बार रामानंद जी गंगा स्नान करने जा रहे थे। सीढ़ी उतरते समय उनका पैर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ गया। रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा। उस शब्द को कबीरदास जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। यह कहना व्यर्थ नहीं होगा कि जीवन में गुरु का महत्व कबीरदास जी के अपने दोहों में पूरी आत्मीयता से किया है। ऐसे कई गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को इस तरह शिक्षित किया है कि उनके शिष्यों ने राष्ट्र की धारा को ही बदल दिया। गुरु हमारे अंतर्मन को आहत किए बिना हमें सभ्य जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया गुरु द्वारा ही मिला है। पुरातन काल से चली आ रही गुरु की महिमा को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। संत कबीर भी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु को सिर्फ याद करने की प्रयास करूंगी। गुरु की महिमा बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु की कृपा हम सबको प्राप्त हो। अंत में कबीरदास जी के दोहों से अपने कलम को विराम देती हूँ। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। धन्यवाद। Good morning everyone. As we all know that today is Guru Purnima. So I heartily welcome and respect all the Gurus of here and hope that your grace remains on everyone and on your part we can illuminate our names. Guru Purnima, also known as Vyas Purnima. It is a spiritual tradition in Hindu culture dedicated to spiritual and academic gurus who are involved or enlightened humans, ready to share their wisdom with very little or no monetary expectation, based on Karma Yoga. It is celebrated as a festival in India, Nepal, Bhutan by Hindus,
Buddhists and Jains. This festival is traditionally observed by Hindus, Buddhists and Jains to revere their chosen spiritual teachers, leaders and express their gratitude. The festival is celebrated on the full moon day Purnima in the Hindu month of Ashadha, June or July, as it is known in the Hindu calendar of India. The festival was revived by Mahatma Gandhi to pay tribute to his spiritual guru Srimad Rajachandra. According to what Indian Shastra says, the word Guru is derived from two Sanskrit words, Gu and Ru, of which the former means ignorance and darkness in a person, and the latter means the person who removes darkness and ignorance from someone. So the word Guru means the person who removes darkness and ignorance from someone. According to the Hindu Shastras, the festival of Guru Purnima is celebrated to mark the birth of Guru Vyas. Guru Vyas is a person who wrote 4 Vedas, 18 Puranas and the Mahabharata. The Buddhists on the other hand celebrate this day in the honor of Lord Buddha, who delivered his first sermon on this day at Saranath after having migrated from Bodh Gaya with 5 of his disciples. They meditate on this day and read the teachings of Lord Buddha. They also observe Upastha, which is a Buddhist tradition followed on this day. Guru Purnima is a wonderful day that reminds everyone the significance of great self-effacing teachers, masters and guru in Oriental culture. So at last, I would like to say that Guru is inspiration and Guru is aspiration. Thank you and have a nice day. Stay safe and stay happy. गुकारस्त्व अंधकारस्तु ऋकारस्तेज उच्चते અંધકાર નિરુદ્વાર ગુરુ રીતે વિધીયતે. આનો અર્થ એવો કે શાસ્ત્રોમાં ગુનો અર્થ અંધકાર એવો થાય છે તથા રૂ એટલે તેમાંથી બહાર લાવનાર. આ મુજબ ગુરુનો અર્થ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાંથી બહાર લાવનાર તથા જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ આપનાર આવો થાય છે. બધાના જીવનમાં ગુરુનું બહુ વધારે મહત્વ હોય છે. આજનો દિવસ એટલે કે અષાઢ સુદ પૂનમ હિન્દુ અને બૌદ્ધ ધર્મમાં ગુરુ પૂર્ણિમા તરીકે મનાવવામાં આવતો ઉત્સવ છે. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ગુરુની પૂજા કરવામાં આવતી હોય છે. હવે આ દિવસે મુખ્યત્વે આધ્યાત્મિક ગુરુનું સ્મરણ અને પૂજન કરવામાં આવે છે. મહાભારતના રચયિતા શ્રી વેદવ્યાસનો જન્મદિવસ આ દિવસે હોવાથી તેમના સન્માનમાં ગુરુ પૂર્ણિમાને વ્યાસ પૂર્ણિમાના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. સંત કબીરના શિષ્ય અને ભક્તિકાળના સંત ઘીસાદાસનો જન્મ પણ આ જ દિવસે થયેલો. મારા ગુરુ ફક્ત મારા શિક્ષક નથી, મારા રોલ મોડેલ, મારા બીજા માતા પિતા, મારા આજીવન માર્ગદર્શક પણ છે. મારા ગુરુ મારું નામ કદાચ 10 વર્ષ પછી ભૂલી જાય, પણ મારા ગુણો તેઓ કદી નહીં ભૂલે. હે ગુરુદેવ, તમે પણ સર્વદા સાચો માર્ગ જ દેખાડ્યો છે. નિસ્વાર્થ ભાવથી મને શિક્ષણ પ્રદાન કરનાર મહાન ગુરુઓને કોટી કોટી વંદન. જ્ઞાન દેવાવાળા ગુરુને વંદન છે. તેમના ચરણોની ધૂળ પણ ચંદન છે. ધન્યવાદ.